quadratic equations. And now we are going to start what are reducible equations. So let's read it out. The equations which apparently doesn't look like a quadratic equation, but after reducing it down, yani simplifying it, it is actually a quadratic equation. So, and the second thing it is written, the reducible equations are mostly in fractions or with square roots. So, let's see. पेपर वन का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, अगर चलो मैं इसको थोड़ा सा we can see this an equation which it has asked us to solve it. X plus 3 equals to 10 upon x. We have to solve it because it is an equation. Yani we will get two answers. Let's see. Apparently, like right now, x plus 3 equals to 10 upon x. यहाँ पे अगर हम देखते हैं apparently यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, x की हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख ही नहीं रही, ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेट्स सिंप्लीफाई इट. बाय सिंप्लीफाइंग मींस वी हैव टू रिमूव द फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. सो क्या होगा, x plus 3 equals to 10 upon x में डिनोमिनेटर वाला x वहां जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 10. ऐसा होगा ना. अब ये एक लीनियर स्ट्रेट इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, यानी विदाउट फ्रिक्शन. And now we can see the highest power of x is 2. That means it is a quadratic equation. चलो, let's shift 10 over here ताकि ये एक general quadratic format के अंदर आ जाए. So 10 यहाँ पे आगे हो जाएगा -10 equals to 0 बन गया. Now हमने कुछ add subtract कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ given equation को solve किया है और हमें पता चला कि जनाब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ दिस प्रोसेस in which we actually simplified a given fractional equation into a quadratic equation is known as reduction. So look here, these steps we have already done, and this is what the quadratic equation that is जो कि हासिल हुई है with the help of reduction. So I hope reduction is very much clear to everyone. अब मुझे इसको solve करना है. क्या होगा जी? This is the question of paper 1. So we cannot solve it with the help of quadratic formula. So we will have to break the middle term. Okay. So hiding the middle term, we came to know that we have to make the factors of 10. So the factors of 10 are 1 into 10, 2 into 5. No other factors are there. Because we want a positive 3, so we are going to use these two factors. हमने लिखा positive चाहिए ना, तो बड़े वाले positive का साइन दिया. So the two factors are positive 5x and negative 2x. Let's simplify it. Okay. हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x
minus 10 equals to 0, we have broken the middle term. And instead of 3 terms, we have now 4 terms. Now we will have to pair them. We will see what is common in the first 2 terms. It is x. And the remainder we have to write in the bracket. What about here? So it is negative 2. And the remainder we have to write in the bracket. Now we can see the 2 brackets are same. So the same bracket is to be written once and the remainder या जो बाहर लिखा हुआ है उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा. अच्छा, note it here one thing. ये नेगेटिव साइन अंदर पॉजिटिव क्यों हो गई? बिकॉज द कॉमन इज नेगेटिव, तो अंदर वाला अपनी साइन चेंज कर लेगा इक्वल्स टू 0. x plus 5 in bracket x minus 2 in bracket equals to 0. अब क्या किया जाएगा? Either x plus 5 would be equals to 0 or x minus 2 will be equals to 0. Now from this we can find the 2 answers. Either x equals to negative 5 or x equals to positive 2. These are the 2 possible answers for the given equation, and the given equation was this: x plus 3 equals to 10 upon x. ये हमारी given equation थी, which apparently doesn't look like a quadratic equation, but what we did, we first of all reduced it, simplified it to convert or to make it in its real shape, that is a quadratic equation, then we solve it. I hope everything till here is fine. If anyone is having any question till here, do let me know by turning on your mic right now. I'm giving you 1 minute for this. And these are known as reducible equations. Okay. So I think no one is having any question. Everything is clear to everyone. Next example. अच्छा ये वही है बेटा जो अभी हमने solve किया. So look, these are the 2 possible answers after reducing. This process is reduction, and then we factorize it. हमने पहले reduction किया, उसके बाद factorization की मदद से we got these 2 answers. Okay, now here is another example. Once again, apparently it is not looking like a quadratic equation. The equation I'm telling it, 2 upon x plus 3 upon x plus 2 equals to 1. Apparently it is not a quadratic equation. It doesn't look like a quadratic equation. So let's reduce it. Okay. अब previous question में तो सिर्फ एक denominator था, तो हमने उसको shift कर दिया था. Here we are having 2. So what we'll have to do? We will have to take LCM. And whenever variable is involved, the LCM of the 2 denominators with a positive or negative sign. देखो बेटा, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वाली कोई साइन मौजूद है, सो एलसीएम विल ऑलवेज बी लाइक दिस, द प्रोडक्ट ऑफ 2. ओके, नाउ बिकॉज दिस इज एलसीएम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के डिनोमिनेटर्स को x टाइम्स x प्लस 2 बनाना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ x है, अब यहाँ पे सिर्फ x है. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई x प्लस 2 in the denominator as well as in the numerator with x plus 2 multiplied by 2. देखो छोटा सा लगा हुआ है, सो कंफ्यूज नहीं होना. ओके, in the second fraction 3 upon x plus 2, डिनोमिनेटर में x plus 2 ऑलरेडी मौजूद है. कौन नहीं मौजूद है? x नहीं है, तो मुझे नीचे और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम लाइक दिस, 2 times x plus 2 plus
3 times x and equals to what? 1. ठीक है, अब now we are solving the numerator. 2 times x plus 2 becomes 2x plus 4 and 3x यानी 3 times plus x is 3x equals to, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये वहां पे भेज दिया हमने ताकि वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 से, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 1. तो अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. डिनोमिनेटर कहता है x को मल्टीप्लाई किया जाएगा x plus 2 से. So x times x plus 2 is actually x square plus 2x. ओके, अब कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है यानी हमने इसको काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है. अब मुझे इसको कौन से फॉर्मेट के अंदर लाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें ये कोशिश करनी होती है कि एक्स स्क्वायर वाली जो साइड है वहां पे तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया जाए. चलो पहले तो इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं. सो 2x and 3x becomes 5x. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस साइड पे अपनी जगह ऐसा का ऐसा यहाँ पे आया 5x प्लस 4. अब ये 5x वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव x और नेगेटिव 5x एंड 4 वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव 4. सो आवर इक्वेशन विल बी लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 2x अपनी जगह ऐसा का ऐसा 5x वहां पे गया नेगेटिव 5x, पॉजिटिव 4 वहां पे गया नेगेटिव 4 इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे लिखूं या फिर यहाँ पे लिखूं, one and the same thing. Now, is this in the form of quadratic equation? No, not yet, because we can solve these two like terms. Positive 2x minus 5x क्या होता है? Negative 3x. So our final quadratic equation is x square minus 3x minus 4 equals to 0. x square minus 3x minus 4 equals to 0. यहाँ तक हमने क्या किया है? रिडक्शन करके हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में तब्दील कर दिया. We have converted it into a quadratic equation by not adding or subtracting anything, or by not completing the square, by not doing any of the methods, but we have just solved it. We have just simplified it. हमने सिर्फ और सिर्फ इसके डिनोमिनेटर्स को रिमूव किया है. So look here, ये तमाम स्टेप्स हमने किए and this is the final quadratic equation. Now x square minus 3x minus 4 equals to 0. Once again, this is also the part of paper 1. We cannot apply the quadratic formula, and if we will go for completing the square method, it will take too long. That's why we once again have to break the middle term. So the factors we have to find out is of 4. So the factors of 4 are 1 multiplied by 4 and 2 multiplied by 2. मुझे क्या चाहिए? Look, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ. 1 multiplied by 4 and 2 multiplied by 2. हमें चाहिए -3. तो इन दोनों से तो नहीं मिल सकता जी -3. So the factors would be 1 and 4. अच्छा जी, अब क्योंकि हमें -3 चाहिए तो बड़े नंबर को हमने नेगेटिव का साइन दे दिया, छोटा नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो लो, -4x plus 1x becomes -3x. तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दी. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. x square plus 1x means x minus 4x minus 4 equals to 0. Once again, what we have done, we have converted, यानी 3 टर्म्स को हमने 4 के अंदर तब्दील किया, कन्वर्ट किया. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज कॉमन. सो इन द फर्स्ट पेयर x is common and the remainder is x plus 1. In the second pair, -4 is common and the remainder once again is x plus 1. अब प्लस क्यों आया? once again बाहर नेगेटिव का साइन कॉमन है. सो x plus 1 जो कि सेम है उसको लिखा once and x minus
जो कि उनका कॉमन पिक आउट किया था, हमने उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व इट. ईदर x plus 1 equals to 0 or x minus 4 equals to 0. लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, either x plus 1, पहले तो वो वाली इक्वेशन लिखते हैं. ओके, इट वाज x plus 1 in the bracket, x minus 4 in another bracket equals to 0. So either x plus 1 equals to 0 or x minus 4 equals to 0. So the two answers for our initial equation are x equals to -1 or x equals to +4. These are the two possible answers for the equation. कौन सी equation थी? 2 upon x plus 3 upon x plus 2 equals to 1. जिसको सबसे पहले हमने reduce किया, simplify किया to convert it into a quadratic equation, and then we simplified it by factorizing, yani by breaking the middle term, and then we got the two answers, and those two answers are these two answers. यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा. This portion is actually reduction. हमने यहाँ तक reduce किया है, and then the rest, including this, is solving with the help of factorizing. I hope everything is clear till here. If anyone is having any other questions, so please let me know right now. Right now means right now, by turning on your mic. Don't write your comments in the chat, because right now I cannot see the chat because I'm sharing my windows with you. Anyone is having any problem, any confusion, any query, do let me know right now. Okay, fine, very good. Now, your turn. Solve it right now. Solve. Achha, this is also paper 1. The question belongs to paper 1. Solve and simplify it. 2 upon x plus 1 plus 3x equals to 4. This is the question. Solve it right now. मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, राइट? सो जो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है ना, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं वहां पे. हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. लाइक दिस. फिर ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3x. अब क्या किया जाएगा जी? अब एक ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल वैल्यू इक्वालिटी की एक साइड पे बिल्कुल अकेली है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शिफ्ट द डिनोमिनेटर ओवर देयर क्विकली, सिंपली. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट वहां जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड पे बेचारा 2 अकेला रह गया. यहाँ पे आ गई हमारे पास 4 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से. नाउ वंस अगेन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस मौजूद हैं. सो व्हाट विल हैव टू डू, इट मींस कि ये 4 जो है वो x से और 1 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली -3 जो है वो -3x जो है वो भी बराबर वाले ब्रैकेट के x और +1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी लाइक दिस. 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 4, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, एंड देन माइनस के 3x को जब x से मल्टीप्लाई किया -3x स्क्वायर, माइनस के 3x को जब +1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -3x. वी कैन सॉल्व दीज टू वैल्यूज, नेगेटिव 3x एंड पॉजिटिव 4x. बच जाएगा ओनली पॉजिटिव x. सो मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करूं, मैंने जल्दबाजी में इसको बहुत बड़ा लिख दिया है. सो it was 2 equals to 4x plus 4 minus 3x square minus 3x.
नेक्स्ट स्टेप 2 इक्वल्स टू 4x में से 3x गए, x बचा, प्लस का 4 माइनस का 3x स्क्वायर। ना x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है राइट हैंड साइड पे और नेगेटिव में है, या इसको पॉजिटिव कर दिया जाए। और कैसे पॉजिटिव किया जाएगा? बाय शिफ्टिंग इन ऑल दीज वैल्यूज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कि जनाब जब हमने इसको रिड्यूस करने के बाद सॉल्व किया, तमाम की तमाम चीज़ों को उस तरफ लेके आ गए, सो वी गॉट व्हाट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 3x। अब once again क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन था, what we'll have to do, we will have to factorize it, यानी हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे कैसे किया जाएगा? देखो, the first and the last term के numbers are 3 and 2, उन दोनों को प्रोडक्ट किया, पता चला 6। तो 6 के फैक्टर्स बनाए मैंने, 1 6 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। क्योंकि मुझे बीच में नेगेटिव x चाहिए तो हमें ये वाला पेयर उठाना पड़ेगा, नेगेटिव x यानी नेगेटिव 3x एंड पॉजिटिव 2x। ओके, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग की स्टार्टिंग वाले दो ब्रैकेट्स में पता चला जी 3 और x दोनों कॉमन है, तो अंदर बच गया x माइनस 1, और यहाँ पे बाद वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव 2 कॉमन है, वंस अगेन वहां बच गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम आ गए, यस आ गए, x माइनस 1 सेम है और 3x प्लस 2 ऐसा का ऐसा लिख दिया। नाउ हमने सक्सेसफुली इसको फैक्टराइज भी कर लिया। नाउ द टाइम इज फॉर द आंसर। ठीक है जी, x माइनस 1 या तो इक्वल होगा 0 के और 3x प्लस 2 इक्वल होगा 0 के। क्या किया जाएगा? इधर और। अब 1 वहां पे जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। एक आंसर तो पता चल गया जी, x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1। दूसरे आंसर के लिए क्या किया जाएगा? पहले 2 वहां जाएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा एंड 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो नेक्स्ट आंसर ऑफ x इज नेगेटिव 2/3। तो जिन हजरात ने आंसर शेयर किया था, माशाल्लाह कोशिश की थी और उनका गलत आंसर आया था। नाउ इज इट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है सो प्लीज लेट मी नो। इसकी प्रिंटेड वाली। सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स। इसकी स्नैप भी ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम।